Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Study Corner. 7th वीडियो के साथ हाजिर है। ये Fpsc SST TGT और लेक्चरर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और जितने भी टीचिंग रिलेटेड पोस्ट हैं उनके लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2020 उनके लिए वन बाय वन टॉपिक वन बाय वन उनके लिए अलग अलग वीडियोस बनाए। इस सीरीज का ये 7th वीडियो है। आज हम क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स से और एफपीएससी के जितने प्रीवियस पेपर्स हैं उनसे लिए गए और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमें लग रहा था कि ये क्वेश्चन आ सकते पेपर में, वो हमने जो है इसमें तैयार किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। Our first question is current theory of classroom management. See, the teacher is जो करंट थ्योरीज है इसके मुताबिक टीचर एक लीडर आपके ख्याल में गाइड है, लीडर है, डायरेक्टर है या डिक्टेटर है। तो इसमें गाइड है, एक गाइडेंस जो है प्रोवाइड करने वाला होता है क्लासरूम के अंदर एक टीचर, अकॉर्डिंग टू द न्यू थ्योरीज। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स are applied differently in elementary and secondary school. क्लासरूम मैनेजमेंट जो है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एलिमेंट्री लेवल में और सेकेंडरी लेवल में वो डिफरेंटली अप्लाई होते हैं। उसकी क्या वजह है? टीचर्स को डिफरेंट ट्रेनिंग मिलती है इसलिए, या schools are structured differently at these levels, the administrative organization change in these level। कौन सा हो सकता है? मीन्स कि ये कि schools स्ट्रक्चर जो है उनका डिफरेंट होता है इस लेवल में, सेकेंडरी और एलिमेंट्री लेवल में। दैट्स वाई क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी इसमें डिफरेंट होते हैं। Mr. Shams has difficulty keeping student on a task. Which of the following strategy will likely increase academic learning time in this classroom? तो कौन सा हो सकता है? मिस्टर शम्स एक टीचर है, हैज अ डिफिकल्टी कीपिंग स्टूडेंट ऑन अ टास्क। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। विच स्ट्रेटजी विल more likely increase academic learning in classroom? So remember that a good sense of humor is important. Hold students accountable for work done during class is the right answer. What he will do, hold students accountable for work done during the class. Next question here, teacher want to have a class discussion in which all 23 of our students can participate equally. Which of the following sitting arrangement would best suited this objective? तो इसके लिए जाहिर सी बात है आपका सेमिनार स्टाइल सही होगा जिसमें तमाम स्टूडेंट्स जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। Students will most likely become self-reliant in class that are managed according to which topic? इसमें आपके पास authoritative होगा। Authoritative is the right answer. Which of the following strategy is recommended for increasing academic learning time? Do not dwell यानी live on a topic once the point has been, यानी एक टॉपिक पे जो है आप बार बार नहीं रहेंगे। You will keep move on, not live on a topic once the topic has been made. Which of the following trait is most typically of the students whom teacher use the authoritative strategy of classroom management? They have high self-esteem. Very simple. Rules and procedures should be dash and dash. Rules and procedures should be reasonable. It should be reasonable and it should be necessary. When getting students to share and assume responsibility in the classroom, teachers should involve them in planning and implementation of classroom initiatives. This is the right answer. Next question is Mr. Rayan offers students praise whenever they show that they are on a task. Mr. Rayan is using what management strategy? He will use the reinforcement strategy. When communicating with parents, teachers should use a manipulative mode of communication. It's very necessary for while you are communicating with the parents.
Which of the following is the best strategy for developing active listening skills? Uh, Practice paraphrasing and others people comments. This is the best strategy ever. One of the following mode of communication which is manipulative. Try to make someone else feel sorry for you. Focusing on the use of nonverbal clues, maintaining momentum of the activity, and redirecting behaviors are strategies of which type of intervention. It's a minor. What are the 3 C's of the classroom management? ये पिछले बहुत सारे पेपर्स के अंदर रिपीट हुआ है, काइंडली अटेंशन कीजिएगा. Which are the 3 C's of the classroom management? 3 C's आपके पास कोऑपरेटिव कम्युनिटी है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड सिविक values है. ठीक है. Which of the following type of bullying occur most frequently? Childs are brittle about looks or speech. Mr. Sajat wants to get to the school year off to a good start. What can he do to make use of the first week of the school? He should assign content activity to the student. Next question is, which of the following statement is not suitable for teacher? They are not interested in molding themselves according to the situation. This is not suitable for the teacher. These are free remaining A, B, and D section is suitable for the teacher. These statements are the true, but this is not suitable for the teacher. The aim of teacher is to develop ability of the students. Why will you ask question from student during a lecture? Are the students carefully listen to your lecture? No, this is not right. This is the right answer. Okay. अच्छा जी. Why will you ask questions from student during a lecture? तो आप पूछेंगे कि आर द स्टूडेंट केयरफुली आपको सुन रहे कि नहीं आपके लेक्चर को. तो ए इज द राइट आंसर. सो इट्स ऑल अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट. ये स्पेशली एसएसटी, टीजीटी और लेक्चरर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, उनके पेडागोजी सेक्शन में ये मस्ट आ सकते हैं और 20 से आपके पेपर्स हैं. सो गुड लक. थैंक यू सो मच फॉर